So I'm going to talk about tree nutrition now. Speak loud. And I don't believe, or I believe, that tree nutrition in India... Please, dhyan do idhar. Keep quiet, please. Tree nutrition in India is very similar to tree nutrition in New Zealand. But first of all, I'll talk about a new planting. What we would do, what is best practice, would be to soil test first and see what levels of nutrient are available before we start. And pH is very important. So we're looking for a pH of between 6.2 and 6.8. And we will adjust for this before we even plant. We will also adjust phosphorus, potassium, magnesium to the optimum levels before we plant for the whole area. How will you adjust the pH? We will adjust the pH with the use of lime. समझ गए जी आप बात? pH का सबसे बड़ा महत्व है कि pH एक प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए 5 पॉइंट. जैसे हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस इन आवर 5.5 to 5.8 to 6.5 in our recommendation pH. Yep, that's fine. ये बोल रहे 6.2 to 6.8. So the way we treat these trees for the first 3 years is quite different to when they're in full production. So once we plant the trees, it's quite simple. We would apply NPK 12-5-15, or you have 12-32-16 as well. We would put a small handful around each tree in the spring when they start to move. And carefully to put it in a band, broadcast in a band around the tree, not poured in a line around the tree. That's very important. ये कह रहे हैं ना जी जो खाद आप डालते हैं ना, जैसे हम यहाँ डब्बा लेके ना चौड़ी पट्टी बनानी है, band application, not a line application. It's very important for a few reasons. Distance from stem. Plant broadcast the fertilizer. What is the width of a band? Okay. You want to be that far away from the plant, and this is what we call the tree, the drip line, or you call the tree basin. So it's really, eventually, after 2 or 3 years, it's out to here. At the moment, it's just in, the roots are in there. But anywhere out to there is fine. The reason why we don't want a narrow band, and this applies for big trees as well, is the roots in that area there cannot cope with that amount of fertilizer. It is salt. It will actually damage those roots. समझ गए जी आप? अगर नाली काट के घनी फर्टिलाइजर डालोगे ना, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी रूट को डैमेज कर सकती है. It is very poor use of fertilizer. You're not getting, if it's urea, you're not using all the nitrogen in the plant. The plant cannot take it up. प्लांट उसको जो है ना, अगर आप घनी उसमें से लाइन खोद के डालोगे ना, जैसे डब्बे से ना नाली काटे उसमें टॉडी डाल दी ना जी, तो जो वो प्लांट के लिए हार्मफुल है और वो अपटेक भी नहीं होगी उसकी पौधे में. Another important reason is if you are a big enough property and you can afford soil testing, if you take a soil test from there, it would be low. If you take it in the band, it would be too high. It is not accurate for soil testing. It has got to be broadcast. Whether it's a small tree or a big tree. And a big tree, where it goes out to here, this is where you broadcast. Very important. So the first 3 years, 2 to 3 years of this new plant, we would put a small handful of 12-5-15 in the spring, then again 6 to 8 weeks later, and then 6 to 8 weeks later after that. And that's it. स्प्लिट डोजेस बोलते हैं कि वे जैसे स्प्रिंग में डाल दी, फिर उसके 6 से 8 हफ्ते बाद डालनी, फिर उसके बाद और 6 से 8 हफ्ते बाद. जैसी प्रैक्टिस होती नहीं कि एक बार ही डालनी ना, उससे अच्छा है कि स्प्लिट डोजेस में. जैसे हम आपको बताते हैं ना यूरिया जो 1 लखनी डालनी, फूल आने से 3 हफ्ते पहले बोलते हैं हम, फिर दूसरी एप्लीकेशन बोलते हैं उसके 1 महीने के बाद. इस तरह से स्प्लिट में डालनी चाहिए, लॉसेस कम होते हैं. Now as we move into full production,
after year 3, 4, 5, we change how we fertilize the plant. It's all about fruit, not about growth. So ये बोल रहे हैं कि जब प्रोडक्शन 3 साल के बाद, देखो ना, सुना नहीं इनका शब्द, हैवी प्रोडक्शन 6 साल के बाद, प्रोडक्शन 3 साल के बाद, तो हम फर्टिलाइजर डोज को भी इंक्रीज कर लें. From what we have observed in Himachal so far is you're putting on about 5, 6, 7, 8 times more nitrogen than we do. We put on much less nitrogen. ये कहते हैं कि हम नाइट्रोजन कम यूज करते हैं और हमारे लिए कहते हैं कि हम नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. ज़्यादा नाइट्रोजन यूज करने से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और डिजीज ज़्यादा लगती है. For the adult tree, if you're applying FYM, NPK, and just 1 kilo of urea, you're applying about 5 times more nitrogen than we do. If you're applying 2 or 3 kilos of nitrogen per tree per year, that is a lot of nitrogen. And my challenge for you, every farmer here, is to pick 10 trees in your orchard and do not apply any urea. And try it. Then, observe. Because if you're pruning, cutting out a lot of growth, a lot of vigor, it's coming from nitrogen. It's pulling the branches down and less nitrogen. More spurs, more fruit, better color, better quality, less disease. समझ गए जी आप? ये बोल रहे हैं कि आपने नाइट्रोजन कम करनी है. एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप क्या करते हैं कि हेड बैक करते नाइट्रोजन, वो यूटिलाइज हो जाती है शूट में. परंतु जब आप ये सिस्टम अडॉप्ट करोगे तो देयर विल बी लेस शूट, देयर विल बी लेस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, व्हिच विल रिजल्ट इन बेटर कलर ऑफ द फ्रूट, better color of the fruit and better size of the fruit. डिपार्टमेंट ने आपने सैंक्शन की हुई ना, तो उस आधार पर जो आपके नहीं, चलो ये आज जो रिकमेंडेशन हिमाचल स्पिंडल की बात कर रहे हैं, देखो वो अलग है, इससे मिक्स नहीं करो, उससे मिक्स नहीं करो, उससे मिक्स नहीं करो ना. अभी तो हम वही फॉलो कर रहे हैं. यस, वी फॉलो. अभी स्पिंडल की बात कर रहे हैं ना. ये बोल रहे हैं ना कि आप क्यों यूज कर रहे हो, हम इसलिए यूज कर रहे हैं. हम तो अभी हिमाचल स्पिंडल की बात कर रहे हैं. आज की बात हो रही ना, आज से पहले तो हम चलो पीछे तो बड़ा कुछ हुआ है, एकदम चेक पीछे आगे को चलो, करना उसका रेशियो. आगे को चलो. इन लेट्स कंप्लीट की क्या बोलती है, आप अपनी करो जैसे. पोटाश सर, पोटाश यूरिया तो हम 3-4 बार जैसे यूज करते हैं. पोटाश का टाइम आ रहा है, यही बताएंगे प्लीज. That's pretty much covers it. The potash you're putting on at the moment, from the information I've seen, is okay. The phosphate I think is a bit high, but it's still early. We're still learning. Give us more time, but I think we have to be careful with how much phosphate we put on these steep hillsides. We can actually get a little bit of phosphate coming down into your waterways, and it doesn't take very much phosphate to become a serious pollutant. Okay, but the early days yet. ज़्यादा खाद का जो होता है ना जी, वो लीच हो जाती है और पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करती है, जो कि हार्मफुल है हम सब लोग.